Assalamu alaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, we are going to talk about emotional hijack. So आपने अक्सर सुना होगा कि emotional hijack हो गया इस situation में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ सब blur हो गया and I acted this way and all of these situations that happen to us in our lives in professional as well as personal lives. So Fakiha, if you could पहले explain कि what is it? What is emotional hijack? वेरी गुड क्वेश्चन. एक तो सबसे पहली बात यह है वी नीड टू एक्सेप्ट दैट इमोशनल हाईजैक इज़ अ रियलिटी. जैसे होता है ना, जैसे किसी प्लेन को हम हाईजैक कर लेते हैं एंड इट्स द सेम थिंग व्हेन वी से इमोशनल हाईजैक दैट्स प्राइमरीली मीन दैट्स आवर इमोशंस टेक ओवर. सो अदर इमोशंस कैन बी वी कैन मैनेज देम और द इमोशंस कैन ड्राइव अस एज वेल. सो ये वो सिचुएशंस होती हैं एंड यू मी एवरीबडी हैज़ experienced it where there is a situation which is unpleasant and somehow anger takes over or frustration takes over and all that जिसको हम कहते हैं ना कि जो थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बैक सीट ले जाता है. लाइक हाउ मेनी टाइम्स हैज इट हैपेंड विद यू. मेरे साथ तो कई दफ़ा इस तरह हुआ है कि आई वुड से समथिंग एंड देन इंस्टेंटली आई वुड रियलाइज दैट ओके I have made a mistake. I could have avoided it. So many times. The question over here is, Farah, why this emotional hijack happens? अच्छा, इसकी एक बड़ी simple सी explanation है and I think so इसको best explain किया जा सकता है with a little slide as well. So, okay, for example, if you visit an office and it's a new office for you and you enter and you really don't know where to go, so what is the first thing you're going to do? Where would you go first? Reception. Exactly. So if we look at this slide as well, to understand emotional hijack, we need to understand our brain, how the anatomy and how the जो उसके अंदर पूरा वो चल रहा होता है सिस्टम वो कैसे चलता है. So बहुत ही simple language में हम लेके चलेंगे. In our brain there is a reception as well. ठीक है. So if you look at that, आपका इस बिल्कुल स्लाइड पे आपको हमारा जो है ये रिसेप्शन भी नज़र आ रहा है. So the information goes first to reception and then reception decides that okay fine which is the right department where I should send this information. So for example, if you see in the slide there is a snake. और सबसे पहले snake किसने देखा है? आँख ने. So the moment I saw that, अब यहाँ से हुआ मैसेज गया सीधा चला गया रिसेप्शन के ऊपर. रिसेप्शन जाके उसको सॉर्ट करती है और सॉर्ट करके इस मैसेज को भेज देती है हमारी विजुअल कॉर्टेक्स को. ठीक है. और वहाँ जाके कि ओके फाइन सांप नज़र आ गया सो यू वांट टू वो कहते हैं ना फ्लाइट फ्रीज फाइट वट एवर रिस्पॉन्स इज देयर. बिफोर द विजुअल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्ड कि इसका क्या करना है, इसी तरह अगर आप देखें तो यही मैसेज एक डॉटेड लाइन है जो जा रही है. देयर इज अनदर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज़ आवर इमोशनल ब्रेन which is known as amygdala as well, our old brain as well. जब ये टेक ओवर कर लेता है तो फिर सब कुछ पीछे रह जाता है. सो अब हुआ ये कि बिफोर द विजुअल कॉर्टेक्स या जो थिंकिंग वाला पार्ट है इससे पहले कि वो रिप्लाई करे, चूंकि समहाउ हमारे ब्रेन की एनाटमी ऐसे है या उसकी वायरिंग ऐसे हुई है कि जो अमेग्डला है उसका डिस्टेंस थोड़ा है. ठीक है ना. और विजुअल कॉर्टेक्स का या बाकी जो है डिस्टेंस ज़्यादा है और ये बड़ा फास्ट काम करता है ऑटो ब्रेन जो है हमारा. सो जो पहला रिस्पॉन्स आता है वो हमारा इमोशनल ब्रेन से आ जाता है, अमेग्डला वाले पार्ट से आ जाता है. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से थिंग्स और वी डू थिंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट विच वी मे रिग्रेट लेटर बिकॉज एंड इट्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. तभी आप देखो ना हमारे जिस तरह बुजुर्ग भी कहते हैं पहले तो लो फिर बोलो और थिंक बिफोर यू स्पीक. Or we say that if you are in a, if you're angry or you are in a bad mood, take deep breaths and then pause and then speak. Exactly the same thing. So why is that pause? Why is that pause necessary? Because that pause is, since the emotional brain has taken over and is, और उसको बेचैनी होती है, बस मुझे कहने दो, मैं ये कह दूँ. आपने देखा ना हमें खुद भी बेचैनी हो रही होती है. So at that time, that pause is crucial. Because when you take that pause, then the emotional brain is really, really hyper at that time and want to respond. But जब आपने pause ले लिया है, तो rationality kicks in. And then there is another, there is जिसको कहते हैं ना, there is a psychology and then there is a physiology as well. When you are angry or anybody is angry,
you would realize that your heartbeat goes faster, Yes. body temperature is higher. ठीक है ना? Body functions are faster, so more heat is produced. So when you take a pause, अच्छा एक तो pause है, दूसरा एक और चीज़ भी जिसको कहते हैं कि like change your position. So if you're sitting, you stand up, or maybe you pace a little bit, or maybe from one room go to another room, or may have a glass of water and all. Why do we do all these things? Because that time which we take, it drops the body temperature. So psychology and physiology दोनों साथ साथ चल रही हैं. Psychology is the science of our emotions and our thinking and all. Physiology is the, like how our body is reacting. So emotional hijack, पहली चीज़ accept कर लें कि जितना भी, I'm a consultant, I'm a trainer, you are a consultant, but haven't we become victim of that? So many times. We are not proud of it, but we have. So one, acceptance, awareness. And secondly, when you realize that, okay, fine, at this point, my emotions are kind of taking over, take a step back. At that time, do not respond. Because whatever we say or whatever we do, a lot of times when we, after an hour or so, when we sit down and reflect back, we think that we should have maybe taken a little pause or waited a little bit. So that's what it is. Wow. Very beautifully explained everything, and that's why I didn't know the whole rationale and science behind it, and that's why when we make decisions, हमें इस तरह होता है कि heat of the moment decisions कभी नहीं लेने चाहिए. You have to think and responding also and taking a deep breath, which is very hard. It's very easier said than done. लेकिन when we do this, तो बहुत ज़्यादा फिर जो ना हमारी जो relationships हैं, especially when it comes to professional life, there's so many things that are sometimes at stake, and when there's emotional hijack, तो relationships आपके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं. बिल्कुल. तो इसमें कोई ऐसे tips, कोई ऐसे actionable behaviors that you can share with our audience जो कि हम daily practice कर सकते हैं to be in more control. बिल्कुल. देखिए वही जो पहले मैंने बात की, 2-3 चीज़ें. एक तो सबसे बड़ी बात है accept it as a reality. So instead of fighting it, it's okay, we find a solution for that. The other thing is that if there is an email, if there is a situation, if there is maybe a WhatsApp message or anything, and you have that great urge to respond right away, hold yourself at that time. थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, and then go back to the same thing maybe after an hour or after 2 hours. Usually जो stress hormones होते हैं, they remain in our bloodstream for good 30 minutes. That's why you realize कि जब हम गुस्से में होते हैं, it takes us a little while. उससे पहले हमें पूरी दुनिया में आग लगी हुई नजर आ रही होती है. So yes, take a pause. And then another thing, Farah, ask yourself, जिसको हम reflective pause में भी कहते हैं, ask yourself a question that how am I responding? अपने ज़हन में सोचें, और जिस तरह मैं respond कर रही हूँ, इसका impact क्या होगा relationship पे भी और task पे भी. And the third question is there a better response? And I tell you, every time you will find a better response. And अभी आप जिस तरह बात कर रहे थे ना कि it's tough, there is no doubt about that. It is very, very tough. I have tried it many times. I still become a victim of that too. Having said that, it's just like exercise. So once you keep trying it, practicing with that, वो कहते हैं ना practice वाले के practice makes a man perfect. So when you keep practicing it, your body or your mind also gets trained. So pause. लिख के लगा ले कमरे में टेबल पे. Pause is important. Pause and reflect always. Yes. Thank you so much for joining us today, Fakiha. Thank you.